से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए। आमचे हात सगळ्या बाळांकडे धुवपाक जाय, फाटल्यान बी धुवपाक जाय आणि नाकटां बी साफ धरूंक जाय. சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவிய பின் சுத்தமான துண்டு பயன்படுத்தி நன்றாக துடைக்கவும். खाने के पहले शौच के बाद सदा धोएं साबुन से हाथ. खांसना छींकना के भी जगह पर छूने के बाद अपना हाथ साबुन न धोया चेंद. असल प्रकारे हाथ धुने आदत राखो. आफसों समाज का प्रत्येक सदस्यहरूलाई बीमारी विरुद्ध ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଖାନାରୁ ଆସିବା ପରେ ଓ ଯେତେବେଳେ ବି ହାତ ମଇଳା ହେବ ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ଧୁଅନ୍ତୁ. जो जैसे संक्रमण के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है बार बार साबुन से हाथ धोना. स्वागत है आपका बनेगा स्वस्थ इंडिया के इस 11वें साल की सेलिब्रेशन में. अच्छा, मैं एक एक्स्ट्रा एक्साइटेड इसलिए भी हूं क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर है ये. लेकिन इस साल ही एक साल में आई बिकम ऑल द मोर कमिटेड टुवर्ड्स दिस मिशन ऑफ हेल्दी होम्स दैट लीड टू अ हेल्दी सोसाइटी एंड अ हेल्दी नेशन. स्वस्थ भारत, ये 11 साल का सफर, इट्स बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ अमेजिंग. हमने हाइजीन, क्लीनलीनेस और स्वच्छता के कैंपेन को एक जन आंदोलन का रूप दिया है. एक या दो नहीं, 10 या 20 नहीं, सैकड़ों या हजारों नहीं, लाखों या करोड़ों नहीं, 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़े. हमने शुरू किया स्कूलों से by asking kids to do the simplest thing all of us should be doing, washing our hands properly. और ये नंबर भी आपको चौंका देगा. 34 बिलियन ऐसे मौके आए when school going children wash their hands, and I must say proudly they did it. फिल्मों में दिखाई जाने वाली हाथों की ताकत को छोड़िए, रियल लाइफ में these hands have the power to keep us healthy and germ free. तो हम सबके हाथ सुपर हीरो हैं. Did you know Swachh Bharat mission in the last 10 years has managed to make 10 crore toilets across India. We are very clear that this is one world, one family. ये कोई 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाने वाली फिल्म नहीं है, ये रियल लाइफ है. जैसे हैप्पी और हेल्दी बनाने की जिम्मेदारी हम पर है, बिल्कुल इस कैंपेन की तरह. आज जब 2 अक्टूबर है, उन महात्मा का जन्मदिन है जिनकी लर्निंग्स हम कभी नहीं भूल सकते. उन्होंने हमें एक ऐसी सोसाइटी बनने का विजन दिया जो सिंप्लिसिटी और सफाई के सहारे आगे बढ़ेगी, ना केवल शरीर से बल्कि मन से भी स्वस्थ रहेगी. अब जब उनकी दिखाई राह हमें आजकल की मॉडर्न बीमारियों से भी बचने का रास्ता दिखा रही है, तो आज हम दिन भर बात करेंगे अबाउट द वेल्थ ऑफ गुड हेल्थ, द भलाई इन सफाई एंड बीइंग मस्त बिकॉज वी ऑल बी स्वस्थ. Namaste, welcome to a milestone moment, the 11th season of the Banega Swasth India campaign. This NDTV-Dettol initiative, launched in 2014, has grown into one of India's longest running and one of the most impactful public health campaigns. As we embark on this new season, we're not just looking ahead, we're celebrating a decade of transformation. Today marks the 10th anniversary of the Swachh Bharat mission, a revolutionary step towards a cleaner, healthier India. 15 अगस्त 2014, इस दिन की क्या खासियत है? लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ने एक नई शुरुआत की. पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से एक बात कही. उन्होंने कहा कि खुले में शौच करना बंद करना होगा, इसका संकल्प लेना होगा हर एक इंसान को, हर एक भारतीय को. और वो एक कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि उसके बाद एक जन आंदोलन की शुरुआत हुई, एक पब्लिक मूवमेंट की शुरुआत हुई, जन भागीदारी की बात हुई. और उसके बाद हमने क्या देखा? दूर दराज के गांव से लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, सड़कों पर, जिलों में, गांव में, अंबिका, हर जगह एक नए भारत का रूप दिखने लगा. और वो नए भारत की रूप की शुरुआत उस तारीख को हुई थी. Absolutely. So join us this season as we explore these questions
showcase inspiring stories from across the country, and continue a collective march towards a healthier, cleaner future. Because together, we're not just witnesses to change, we are its architects. और इसी आर्किटेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए एक बहुत अहम आर्किटेक्ट हैं जिनको मैं स्टेज पर अब इनवाइट करूंगी। गौरव जैन जी हैं, ईवीपी रीजनल डायरेक्टर साउथ एशिया रैकेट, और संजय पुगलिया जी, एडिटर इन चीफ एनडीटीवी नेटवर्क। तालियों से उनके स्वागत करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पर, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अंबिका ने कहा, आर्किटेक्ट, सो ये हम लोग सब आर्किटेक्ट हैं इस नई शुरुआत के लिए। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हमारे लिए कोई एक मैसेज भेजा है, उसको सुनते हैं। नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है, हमारे राष्ट्रपिता की जयंती। महात्मा गांधी को देशवासी स्वाधीनता दिलाने वाले बापू के रूप में तो नमन करते ही है। महात्मा गांधी को अस्वच्छता से लड़ाई के प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी हम याद करते हैं। बापू ने स्वच्छता से स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण का पाठ पढ़ाया था। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। पिछले 1 दशक में उस अभियान ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इस अभियान का उद्देश्य है स्वच्छता के लिए लोगों की जीवन शैली में बदलाव और सबका अच्छा स्वास्थ्य। मुझे बताया गया है कि बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पिछले 1 दशक में कई कदम उठाए गए हैं। नए विचारों को मंच दिया गया है, नए प्रयोगों को प्रोत्साहित किया गया है। इससे लोगों के बर्ताव में बदलाव आ रहा है। स्वच्छता को जीवन का अभिन्न अंग बनाना ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। स्वच्छता स्वास्थ्य का आधार है। 2011 से 2020 के बीच स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल 60-70 हजार नवजात बच्चों की जान बचाई जा सकी है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। नियमित रूप से हाथ धोने जैसे छोटी आदत से भी प्राण रक्षा हो सकती है। एनडीटीवी और अन्य समूहों के इस संयुक्त प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। इस प्रयास से हाथ की साफ सफाई के प्रति बच्चों में जानकारी बढ़ी है। इससे गर्भवती महिलाओं में भी सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ऐसे हेल्थ वर्कर्स प्रशिक्षित किए गए हैं जो सरकार के 0 डायरिया लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर रही है। इन स्वास्थ्य सेनानियों के प्रयास के कारण अनेक बच्चों ने हाथ की साफ सफाई की आदत डाली है। हाथों को ठीक से धोकर साफ रखने में सबकी भलाई है। धन्यवाद। 10 साल तक ये कैंपेन जो आपने हेल्थ और हाइजीन के अराउंड खड़ा किया है, ऐसे कैंपेन मैंने अपनी पब्लिक लाइफ में बहुत कम देखे हैं जो इतना सस्टेन करे और कंपनी उसको इस तरीके से ऑब्सेशन और पैशन के साथ उस पर काम करे। What motivates Reckitt to do this? Sanjay ji, before I answer that, I must say I'm filled with a huge amount of gratitude to be part of this campaign, to be leading it from a company or leading the company that leads this. So it's a matter of great pride. It's a matter of great pride for all our employees, for the company, that we are sitting here in the 11th season. And as you said, it's perhaps the longest running campaign of this kind. When we look at brands, when we look at careers, I think आपका career, Ayushmann जी का career, brands आप देखें, successful brands, companies, उनके 3-4 there are 3 or 4 things that make long-term success happen. और वो हर चीज में similar ही है. So first of all, I think for us, it's the purpose. और जब हमने start किया था, CEO at that time, Mr. Kapoor, used to say that you have to do good to do good. Which means he said that आपको society के लिए कुछ करना पड़ेगा for the business to do good. That's how it started. And I think today our purpose is to protect, heal and nurture in the relentless pursuit of a healthier, cleaner world. The second, I think, and maybe very importantly, is the team. And I think with people like you, sir, NDTV has been there. I think Ambika has been around for all the 11 years. Manika, Anusuya, I can talk about the whole team who's been there since the beginning of this campaign.
My team, Ravi, I think he has 3 people. He's a 3 people army, and he's the most passionate person I have seen in my life who's led this, and nobody apt than him to lead this. And all our partners, so we have about 100 partners, and we can continue to name them. Sesame Street, ma'am is sitting here, Plan India, Jagran, huge amount of work from the government sector. There are UNICEF, UN agencies, all of them. So we all come together, and we are all very like-minded in what these guys are experts. We provide a bit of guidance, and because this whole expertise comes together, it makes this tick, and we challenge each other, we push each other, and we make things happen. So I think that's the most important second thing. The third thing, I think, to be successful, you require expertise. अगर आपके पास talent नहीं है या expertise नहीं है, आप 1 साल 2 साल के बाद you will fail. And I think with us being a health and hygiene company, we do this. I mean, we think about germs, we think about disease for our brands. All our people think about it. Our sales people think about it. Our marketing people, our R&D people. This is what we do for a living. So all of the people that we have and the organizations that work, they help us to make initiatives and programs that make behavioral change happen on a large scale. And that's obviously very important. So expertise is the third thing. And I think the fourth and maybe the most important thing is results. अगर आपके पास for being successful over the long term, अगर आपके पहले साल या दूसरे साल के बाद results नहीं आएंगे, तो आप उसके आगे नहीं जाओगे. That's our adrenaline. We see the change. We make more change happen. We see more of it, and we try to, scale the next peak as we go along. And I must say, in the morning I met your videographer. Where is he? Manoj, and I just happened to meet him, and Ravi told me that he's been with us for the last 11 years in every campaign, and he's traveled to the mountains and the hills. And I just happened to meet him, and he said something that made my day. And he said, sir, आपका campaign मैंने इतना साल देखा है, और जब मैं गांव में जाता हूं, जब लोग बात करते हैं और जब मैं चेंज देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है. And I think hearing it from somebody like that just made me feel amazing, because it's like a testament to what is happening. And I'm not saying it, he said it, and I've told Ravi, this is our reward. And the guy who's been with us, and he said it himself. So I think to me, these are the 4 or 5 things that, and we are here for the long haul. We are here till India is completely healthy, and we will continue. अगर टीम वर्क मकसद के अलावा टीम वर्क क्या कर सकता है, इस पर कोई केस स्टडी करनी हो तो हमारा ये प्रोजेक्ट स्टडी करना चाहिए. जी, absolutely. In fact, I think passion एक बहुत important चीज़ है, which you rightly said, Gaurav, and of course expertise वो सब साथ आता है. But since you have talked about the impact, and we are going to be showing that through the next 4 hours, the real measure of these numbers, 8.5 lakh schools, 24 million children. The real measure is the voices of those who have been impacted, like Gaurav just said. Well, let's move ahead. We're now being joined by the CEO of Reckitt, Mr. Chris Litt. Welcome to the launch of Season 11 of the NDTV-Dettol Banega Swasth India. You must be very proud of what it has achieved. Tell us what makes the Banega Swasth India campaign unique and special compared to other public health initiatives in India. At Reckitt, we are immensely proud of the fact that Banega Swasth India is one of the longest running health campaigns, going strong for over a decade. It's been a brilliant partnership between our most trusted health and hygiene brand, Dettol, in partnership with one of the most trusted news channels, NDTV. Together, over the years, we have achieved a huge number of successes, and I hope you are all as proud as we are at Reckitt that these will make meaningful impact in the lives of people right across India. Overall, school absenteeism has been reduced by nearly 40%. Children are reporting feeling happier, healthier, and more confident. Dettol Banega Swasth India scored 93.6% on the Student Happiness Index, and we all know that they can be a hard audience to please. 93% of teachers confirmed the Dettol hygiene curriculum was accessible,
even for kids with slower learning outcomes, which is fundamental to the idea that no one is left behind. The thing we are most proud of, from our starting point of 1,500 schools, is that we're now reaching more than 1 million. That's incredible. But what I think really sets Banega Swasth India apart is our emphasis on public participation. We have taken hygiene education to millions of children across the country, and we know those children take that knowledge back to their homes, their families, and their communities, further spreading the reach of these important messages. Our recent transition to focus on a healthier India meant this campaign embraced a broader and more holistic vision: one health, one planet, one future, focused on one world hygiene. It was the right thing to do and will continue to evolve as the needs of the people we serve change. The campaign has received recognition and awards from 2 presidents of India, and we are enormously grateful for the ongoing support of the Indian government. Many of you here today have been part of this campaign for years, and we also send our thanks to the Dalai Lama, Nobel laureates, Oscar winners, and vice presidents, ministers, celebrities, teachers, and parents and other leaders who have lent us your time, support, and your expertise. We could not have done this without you, and the success of this program is all of ours to share. Well, thank you so much, Mr. Litton. You have been talking about the impact and most importantly, what you said about the children. So please stay with us. We are going to come back to you a little later this morning. सावन में लग गई आग दिल मेरा, सुने हसीना पागल दीवानी, सुने हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी रात के दिल मेरा। आपको स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ मीका सिंह के गाने सुनने चाहिए, ताकि आप डांस करो, एंजॉय करो, फिट रहो मेरी तरह। 48 इयर्स का हो गया हूं मैं आपके सामने, क्योंकि मैं खुद अपने गाने सुनता हूं और एंजॉय करता हूं। और सावन लगी यार, सावन का महीना है। Here we go, play with now. सावन में लग गई आग दिल मेरा, ओ सावन में लग गई आग दिल मेरा, ओ सुने हसीना पागल दीवानी, आज न सोया सारी, आज न सोया सारी, आज न सोया सारी रात के दिल मेरा। सावन में लग गई आग दिल मेरा, ओ गजरा लगा के आई सुन हर के सुने, गजरा लगा के आई सुन हर जबती है गोरी गाले सुन है, जान किस पर सुन है,
जे टूरियां दी रात के दिन लग गई आग तू मेरा कमानी जाता हूँ चक दे और जुम्मे की रात है ओ जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है अल्लाह बचाए मुझे तेरे भार से जग सारा निकल गया हूं प्यार हवा दे विच बिगड़ गया